very warm welcome to you all in a brand new show and an episode of Chit Chat with Swati Bhatia. मेरा मन था कुछ ऐसी चीज लेकर आने का, किसी ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने का जो बहुत ही अजीज है हम सबके। हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीजे नारायण की, द टाइकून, जिन्होंने 1999 में हंगामा मचा दिया था। हर एक के घर में पेट डॉग पहुंचा दिया था, क्योंकि हर लड़का उस टाइम डॉग लेके निकलता था इस उम्मीद के साथ कि उसे प्यारी सी एक लड़की मिल जाएगी। और ये इतना स्वीट सॉन्ग था, आंखों में तेरा ही चेहरा। आई एम रियली बैड इन सिंगिंग। आई एम हार्डकोर फैन ऑफ डीजे नारायण, एंड उस जमाने में व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, ये गाना वेरी ऑनेस्टली हम सब बच्चों को, जो टीनेजर्स थे, हमें इतना इन्फ्लुएंस करता था। वी ऑल स्टार्टेड लिविंग इन दोस एराज। और शाहिद कपूर को हम कैसे भूल सकते हैं, उनका डेब्यू था और इस एल्बम के थ्रू उन्होंने शुरुआत की थी। बट टुडे, लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 2 decades, 1999 के बाद 2022, DJ, where were you? We all really missed you. In 2022, you have come up with Tere Naam, which is again a huge hit. I mean, I don't know कैसे मैं आपको बोलूं, but आप कहाँ थे और क्यों थे इतने टाइम के लिए गायब? Hey, hi. Well, thank you for the welcome and that you've given me. 99 के बाद 2002 के बीच में हमने 3 एल्बम्स करी थी। आंखों में तेरा ही चेहरा, देखा है ये हवा कहती क्या, एंड ऑफ कोर्स देखा है तेरी आंखों को। So 3 albums were huge albums, and we did around 800 plus concerts till around almost till 2012-13 तक हम करते रहे. So and we were very busy all the time, and we were enjoying life, traveling, doing concerts, and also doing all other things in life. Life is one. Life is what happens to you while you're busy making other plans, isn't it? So life is what happens to you while you're busy making other plans. So we zindagi na milegi dobara, in case you may say it. So we kind of traveled, and we did all kinds of things, experimented with life, experimented with different theater, experimented with films, experimented with whatever I wanted to do in life. So in case I want to go back today and God takes me back, I say, ho gaya. I mean, I've done so many things. Okay, justified, हम मान जाते हैं आपकी बात। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों बाद, क्योंकि मुझे आपकी जर्नी का पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आप FTII के डायरेक्टर रह चुके हैं, आप काफी इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर रह चुके हैं, लाइक यू हैव डन बिग शॉर्ट थिंग्स इन दिस 2 decades। लेकिन ये अचानक से वापस संगीत में आना, तेरे नाम लेकर आना और एकदम से यूट्यूब पे छा जाना, ये क्या राज है? Swati, I think it's a zid. More than anything, it's a zid, and zid to do it once again, just for the heck of it, for my friends, for my family, and for my this guy Kul Gullu मेरा दोस्त है, उसके लिए, MP मेरा दोस्त है, उसके लिए, people have done so much for me as friends, music के लिए, they've given up their own lots of happinesses, who were part of the journey, but they couldn't at that. I mean, due to some reasons, they weren't there at those final moments. So I kind of have to zid है, have to do it again, और मैं करूँगा ये। आपका जो नया गाना है तेरे नाम, मैं अगर उस पे बात करूं तो हम कह सकते हैं ना, फ्यूजन है, लाइक ओल्ड टाइम्स का और आज के हिसाब से अगर उसको पिक्चराइज किया गया है। लेकिन बात वो वैसे ही है कि अपना ओल्ड टाइम, अपना कॉलेज डेज, बिकॉज द बेस्ट डेज वाज द कॉलेज डेज, नो फिकर, नो नथिंग, बस क्रश। You see, life is one continuity. Everything is, I always think it's a fusion of present and past. So this song is also is about I mean, it's about all those people who kind of got caught with things in life. College के बाद, campuses के बाद अपना काम करने लगते हैं, busy हो जाते हैं professional life में अपने 99% of us, and they miss the best days of their life. कोई ना कोई तो ऐसा होता है कि जिसको वो मिस करते हैं। इट कुड बी फैमिली मेम्बर ऑल्सो, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई कॉलेज का दोस्त हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। इट्स अबाउट दोज ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो मोहल्ले की सड़कें वो जॉनी की भजिया, गुलाबी पतंगे वो गुड़िया की गुड़िया, बहुत खूबसूरत बेधड़क दिन थे अपने,
कुछ लेना न देना सभी तो थे अपने, isn't it? So it's about that. जहाँ ढली कोई शाम याद आए तेरा नाम. So it's about those things. Yes. अच्छा मुझे ना याद है मैं आपसे ना 2-3 बार मिल चुकी हूँ। मुझे याद है कि एक बार मैं एफटीआई में आई थी आपसे, तब मेरी मुलाकात हुई थी और तब आप वहाँ के डायरेक्टर थे और काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी हमारी और एक छोटा-सा मैंने इंटरव्यू भी दिया था तब भी आपका। और उसके बाद मुझे आपकी मुलाकात हुई थी हमारी साउथ एशियन गेम्स में, जहाँ मैं कमेंट्री कर रही थी एंड आप उस पूरे ऑर्गेनाइज़ करके आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तब भी हमारे एक इवेंट में मुलाकात हुई थी। तो ये जो जर्नी रही है आपकी, from a musician, then a singer, composer, and then an academician, and the director, and then event manager, or maybe you can call a corporate events when you are organizing at a huge level. तो ये किस तरह की जर्नी थी और इसमें आपका अनुभव क्या रहा? अब बताओ, isn't this such a funny thing? You're here talking about Tera Naam, and you also talking to me about FTII. You also talking to me about South Asian game. क्या है यार? I also used to ask this question to myself and to God Almighty. What are you planning for me? और जिंदगी कितने कितने खूबसूरत experiences I would get. I think we all do so many things in life, and we should continue to do whatever pleases us. And few things cannot be planned, and but one should enjoy. I really do enjoy that part of it. I think I'm very very fortunate to have this kind of varied experience. I don't think anybody who's headed film shoot would be heading something a very very important thing with sports also. And I must confess one thing. I've done lots of experiences in defense armed forces also. I've ridden in tanks. I've gone to Siachen and choppers so many times. I've gone to submarines. I've fired machine guns. So everything has happened. And so I'm pretty satisfied and satiated person in life. मुझे भगवान से कुछ और नहीं चाहिए. I'm full of gratitude and humble gratitude. कि thank you for everything. And so this is it. And life is one, and just accept things gracefully. Yes, FTI was 2011 से लेके 2016 के बीच में. I was almost there for 4.5 5 years. It was a beautiful experience, wonderful kids, all deviants. अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे सिनेमा बनाने आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, या स्क्रिप्ट लिखने आए हैं. It's paradise. I learned so much there बच्चों के साथ. I really loved them. And somehow I have also have this थोड़ा सा गुमान की शायद kids also used to like me. It's a happy feeling. We were almost like a family, and I remember you also coming there. It was a nice moment, and I'm glad we connected again, isn't it? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने कम दिनों में इतने मिलियन व्यूज, ये आपके लिए how surprising it is for you. Yes, it was very exciting, and yes, I'm surprised. I was surprised. 15,000 25,000 views daily आ रहे हैं. So I'm very surprised and happily surprised. But it also vindicates one thing, कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, and if you if you depend on your music and melody only to promote the things and to reach out, ultimately कहीं ना कहीं पहुंचेगा. धीरे धीरे चलता रहेगा, like a good old car, not like a rocket will go and then splash on the sea immediately. और मेरी गाड़ी चलती रहेगी. So I like it. Okay, those days it was more about TV, radio, very corporate and very professional outlook. But nowadays it's all digitalized. Everything is on digital platform and it's on social media, just a click away. People are there on Facebook, Insta, and YouTube is the best medium to spread your news, your videos. तो इस तरह का जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और डिजिटल टाइम के साथ आना है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, ये जर्नी आपकी किस तरह से है? वर यू लिटिल नर्वस बिफोर यू स्टार्टेड दिस जर्नी कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा यूट्यूब पे एंड व्हाट काइंड ऑफ मीडियम इज दिस, लाइक वर यू रियली अवेयर और यू वर लिटिल नर्वस अबाउट इट? बहुत डर था, मैं घबरा गया था. you know, no fear per se, but bit of apprehension was there. I was a bit nervous a day before, and in fact, very nervous when it was being launched. And it was launched in the morning of 25th
और आई वाज आस्किंग माय म्यूजिक कंपनी मंडे को क्यों लॉन्च किया, मंडे को तो हर आदमी ऑफिस में बिजी होगा, कोई नहीं देखेगा दिन भर सॉन्ग, क्या ज़रूरत थी मंडे को लॉन्च करने की, सैटरडे संडे करना चाहिए था एंड ऑल दैट स्टफ, बट दे कन्विंस्ड मी इट्स अ गुड डे, डोंट वरी. सो परहैप्स इतने दिनों बाद का था, देयरफॉर थोड़ा सा रहता है. But that nervous excitement is enjoyable experience. Oh yes, I was not on social media, and I never felt any absence of it. Life was very beautiful without social media. In fact, now that I've come on social media, it's pretty um, getting stressful in the sense you have to keep doing everything all the time. So I wasn't doing those things before, but I guess it's important for anyone now in the current context, in case you need to reach out to people, in case you need to reach communicate with public for whatever reasons. I think social media is a necessity because because mobile is one gadget is everyone's hand, universally almost. So आपको उसी के जरिए ही तो पहुंचना पड़ेगा, और वो that जरिया is digital. No longer, I mean, I can't reach out to you through a newspaper or through a posting or a hoarding or a television channel. So it's a majburi, yet it's important also. I was away from it, but I reluctantly had to accept, भाई हमें social media पे आना है, मजबूर. I mean, I can't do without it anymore, right? Okay, I want to ask you, DJ, like you have seen a transformation, right? We all know it. उस टाइम पे काफी इमोशनल चीजें बनती थी, people could relate each other, and एक couple relationship was also very different that time. Couple goals were very different, but अभी क्या है, अभी बहुत अलग time आ चुका है. Like people have their own opinion, and girls too have their own path to choose. I mean, there are like more beyond emotions हम लोग जा चुके हैं, and more of the practical side आ चुकी है. तो जब आप ये गाना लेकर आए जिसमें आपने फ्यूजन सोचा कि हम ट्राई करते हैं, सम ओल्ड बातें और नए सिरे से इसको लव स्टोरी को दिखाते हैं, तो क्या आपको कुछ कोई ऐसी बात थी आपके जहन में कि आपको लगा कि यार यहाँ पे मुझे ये चीज लानी चाहिए? Yes, crush at that time was very different from the crush these days. I don't know. I haven't had a crush of late, so I don't know what the modern crush is all about. But yes, I guess looking at these kids and youngsters around, crushes are happening, and lots of crushes are happening, very short-lived also, and that's very tragic. I see so many breakups all around, and very people are taking very casually. They sing the songs, breakup ho gaya, and all this stuff. It's I couldn't have imagined that thing. I think love and crush are those very beautiful emotions which you need to cherish and take it take as far as possible. So in this song also we have tried to balance this thing. I mean, as we grow old and we mature in life, we remember the best days of our life. कि चढ़ले कोई शाम याद आए तेरा नाम, कोई तो होता है ना कि जिसको कि आप याद करते हैं कभी ना कभी. ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको कि कोई ना याद आता हो, isn't it? The person could be your friend, could be your beloved, could be your teacher, could be your family member. There must be someone whom you wish that person was here. Sometimes आप अपनी तन्हाई में, अपनी loneliness में you remember that person. And वो अचानक कहाँ से आपकी मेमोरी में आ जाता है, you don't even recall, you don't even know. While you're driving, while you're drinking something, while you're just sleeping, about to sleep, you get that beautiful glimpse of that person again in your life, in your mind, in your heart. So we've tried to give balance in this particular song, and let's see. Things change. Things have changed so much पहले और आप में आज में. So but I'm not disrespecting आज का, but perhaps I'm slightly older with that kind of sentiment. I would like to keep my love. तो इस पूरे एरा को आपने देखा है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि वो जो चेंजेस आए हैं वो गुड है या बैड है? आपकी नजर में किस तरह के चेंजेस हैं? आप इनको कैसे लेते हैं? The biggest difference is in then and now is that
now people have to kind of compose lots of things, keeping the social media digital platforms also in mind. I need to make something which fits into 30 seconds. I mean, my song should be set such that for 30 seconds should be good enough to get a click on Instagram or YouTube or Facebook, और 15 सेकंड के लिए चीज़ होनी चाहिए. Previously we never used to think like that. I never composed कि हमें कुछ अच्छा इंटरल्यूड करना है, आंखों का just we never thought like that. So this compulsion was not there. Music was being created for the heck of music, not for the heck of social media or being hammered according to the frame given by social media. That's the compulsion. This is one of the things I don't like also. And the other thing, which is this thing, because of that, अगर ऐसा होता तो I'm sure many of you would not have some great starting pieces. अगर because 30 सेकंड से ज़्यादा के तो pieces ही होते हैं म्यूजिक के. अब फॉर एग्जांपल चांद मेरा तो इसका जो स्टार्टिंग पीस है दैट itself is lasting 15-20 seconds. तो अगर इंस्टाग्राम उसके हिसाब से होता तो ये गाना तो कोई आगे पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज या तो ये काटना पड़ता दिस पार्ट, और दिस पार्ट वुड हैव बीन had to be rated some form, ये डायरेक्ट वोकल से स्टार्ट करने पड़ते. So it's bit of a fun, but it's sometimes the aesthetics go away. An important difference is this: everything is so digital, computer based that you can create with a couple of good software thing here and there, and do 110 or 1000 edits and make your stuff sound good, even it was not good actually in the beginning. Pehle it was a group team effort, lots of group effort, people used to compose together, interludes nikal rahe hain. So music used to bring lots of friendships also. अब वो चीज़ नहीं है, and now somebody sent a melody to someone, somebody created a rhythm somewhere, and then somebody programmed ta. It's called MIDI programming. कुछ digital interface करे, अच्छे से उसमें plugins लगाया and make the sound beautiful. So it's become very digitally uh, emotionless, I would say. I mean, so I personally don't like that stuff. So I'm trying to make a balance between what was there happening in the past and what is happening before. I hope I'm able to strike some kind of a balance between the two. And as far as good point is concerned, as I said, ki bhai, without social media, you can't communicate anymore. So it is effective. It reaches out to so many people in a very cost-effective manner to millions of people across the globe. You don't have to pay to Instagram. You don't have to pay to Twitter. You don't have to pay to WhatsApp, probably. I mean, but you have to just send a message. Now, through its own AI mechanisms and distribution mechanisms, it can reach out to the globe in a few seconds time. So that's extraordinarily wonderful. डीजे व्हेन यू स्टार्टेड विद आंखों में तेरा ही चेहरा, उस टाइम पे एक चलन था एल्बम्स निकालने का, और आपकी बहुत ही सॉफ्ट स्वीट सी लव स्टोरी थी, बहुत ही वन साइड लव वाली टाइप की स्टोरी थी, वेरी स्वीट टीनेजर टाइप की स्टोरी थी. तो और इतना मैसिव ह्यूज वो हिट था. तो उस वक्त आपको क्या इस चीज का अंदाजा था कि आप जो गाना बना रहे हैं वो इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा, इतने लोग उसको चाहने लगेंगे? एंड द बेस्ट पार्ट इज, आई मस्ट टेल यू, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, एंड ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उस वक्त आपकी आर्यन इतनी हिट थी कि शाहरुख खान के बेटे का नाम उन्होंने आर्यन के नाम पे रखा था, आपकी एल्बम के नाम से, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी. एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बोला था कि जिस तरह से आर्यन हिट हुई है, आई वांट माय सन टू बी हिट लाइक दैट वे, एंड इस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इतनी पॉपुलैरिटी ले जिस तरह से आर्यन इस वक्त पॉपुलैरिटी ले रहे हैं. तो उस आर्यन के नाम पे उन्होंने नाम रखा था, विच इज अ बिग ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, एंड इट्स अ बिग सक्सेस. क्योंकि जब हम किसी मूवी के नाम से अपने बच्चों के नाम रखने लग जाते हैं, लाइक दैट मीन्स हमने कितना उसको ग्रैब किया है, एंड दैट इज द सुपरस्टार. तो उन्होंने भी उसको इतना ग्रैब आपका एब्जॉर्ब किया था आपकी एल्बम को कि वो आपको घर पे ही ले आए आपके नाम को. तो इस तरह की जो सक्सेस आपने देखी, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम बदली कि सेम ट्रैक पे थी? क्या चेंजेस आए थे इस मैसिव सक्सेस के बाद? Yes, आंखों में तेरा ही चेहरा and all those albums were a huge hit. सच बताएं स्वाति, we never felt कि we were hit. हमें पता ही नहीं लगा था कि हम इतने हिट हैं या लोग हमारे गाने इतने पसंद कर रहे हैं. I swear, I never felt कि we are hit.
and that we have impacted many lives and we have given lots of joy to people. हमें कभी नहीं पता लगा. हमें in fact बहुत दिनों बाद कभी कभी लगता था कि are we really so popular? Why? हमारे गाने लोग सुनते क्यों हैं? मुझे तो इसी बात में डाउट होता था. In fact, at one of the concerts, people had paid almost 1,000 rupees somewhere in Vijayawada कहीं पर, and there were thousands all around. So something happened कि ऐसा लगा था शायद कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ जाए किसी कारण से. I think suddenly rains were happening. So we said we won't be able to do the show because it's all water on the stage and instruments are wet. कहते हैं सर नहीं नहीं अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. हमने क्यों? कहते इतने 7-8 हज़ार लोग बैठे हुए, उन्होंने 6-1 हज़ार का टिकट लिया है. मैंने 1 हज़ार का टिकट क्यों लिया है हमारे गाना सुनने के लिए? हम तो 10 रुपये भी अपने आप को ना दें. वो हंसने लगा. कहते सर आप क्या बोल रहे हो सर, ये हाउसफुल है यहाँ पे, ये हज़ार रुपये के लोग आपने टिकट लिया आपको गाना देखने के लिए. सो वी हैड दोज एक्सपीरियंसेस. वी कभी लगा नहीं, दैट्स द रीज़न वी फेल्ट ग्राउंडेड. हमारे कॉन्सर्ट में एट सर्टन सिटीज़ दे यूज्ड टू कर्फ्यूज यूज्ड टू बी इम्पोज्ड इन सर्टन प्लेसेस. आई रिमेंबर एक आध शहरों में कर्फ्यू लगाया गया. एंड व्हेन यूज्ड टू एंटर द सिटी, कई सिटीज़ में बैरिकेड्स रहते थे अलॉन्ग द रोड टू इंश्योर कि लोग रोड पर ना आ जाएं. सो इनफैक्ट अभी कल ही कुछ दिन पहले किसी ने एक वन ऑफ द शहर की क्लिपिंग्स भेजी हैं. आई नेवर हैड दैट. आई वाज वेरी सरप्राइज कि अरे ऐसा हुआ था. नथिंग चेंज लाइक दैट. आई थिंक वी डिडंट चेंज आफ्टर द सक्सेसेस and we never felt that it had gone to our head because of that. And जैसे हम पहले थे वैसे बाद आज भी हैं. I mean, people come and love and respect you and hug you and take your autographs. It's always very pleasing. But nothing changed except that कि घर में आप समय थोड़ा आपका कम हो गया. At times you had to give lots of time to the concerts and go here and there. So and आपके friends and दोस्त रिश्तेदार थोड़ा सा आपको कभी कभी bit just look at you with bit of amusement, you know. So that's bit of थोड़ा सा different लगता है at that point, but otherwise nothing changed. हम देख रहे हैं टाइम इज चेंजिंग. आप अगर 1999 को देखो, जो इस टाइम पे आप एक बहुत यंग स्टफ लेकर आए थे, बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग लेकर आए थे, और आज के एरा में, आज के सॉन्ग्स में, आज की जो कंटेंट मार्केट है उसमें बहुत फर्क आ चुका है. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज के टाइम पे आप हमारे यूथ को पैशनेट टुवर्ड्स देयर वर्क किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? व्हाट आर द टिप्स और समथिंग यू वांट टू रियली शेयर विद दोस पीपल कि इस तरह से यू कैन बी ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू समथिंग, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे आपने भी ऑन स्क्रीन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी ऑलवेज ऑन स्क्रीन. आप ऑफ स्क्रीन भी थे बट यू वर डूइंग मैसिवली गुड जॉब. सो इस तरह का मोटिवेशन जो है हम यूथ को किस तरह से आप देना चाहेंगे? Swati, how do I say, am I a good example? Do you mean to say, in case you think I'm a good example? Well, I can say, don't give up, and in case you persist, you will find your mojo, you will find your space. और आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल. ऐसे सॉन्ग इन केस आपने पहले नहीं सुना होगा. इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि ये मैं गिव अप नहीं करूँगा, तो सूनर और लेटर वो आपकी the whole environment and the world would conspire, whole कायनात would conspire to ensure that you get your thing. If एक बड़ा सा मोटा पेड़ भी होगा, अगर आप उसको शार्पेस्ट चाकू से अलग अलग पॉइंट पर हर बार काटोगे तो पेड़ 10 जन्म में भी नहीं गिरेगा. अगर आपके पास एक मोटा सा भी चम्मच है विच इज़ नॉट शार्प, उसको एक ही पॉइंट पे आप निप करते रहेंगे बार बार, आई एम श्योर 4-5-6 साल के बाद पेड़ गिर जाएगा, बिकॉज वो पेड़ उस पॉइंट पे खोखला होता जाएगा, कटता जाएगा. सो यू नीड टू परसिस्ट एट द सेम पॉइंट. This is it, I would say. Okay, DJ, the trend says like, subscribe and share. तो आप ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने में कितने कंफर्टेबल फील करते हैं, और क्या आप वाकई में इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? क्योंकि आप यूट्यूब पर हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आने वाले हैं और आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या आपके मन में भी ये वाले ट्रेंडिंग वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स घूम रहे हैं? Well, so actually these are very new things to me, and it's very embarrassing also. How can I ask my friend to like my thing? You can't force it. How can I ask you to subscribe to my thing? It's very embarrassing, and share. So I don't know how long this thing would last. It sounds very it's full of vanity, these things. I really don't like it, but I was literally forced this time with a gun on my head, saying you better do it like that.
So I had to create those Instagram handles and Twitter handles, So and ask some of my friends to like or subscribe. So, but toba toba, it's not a good feeling asking people to like or subscribe. I mean, if you're good enough, people should like or subscribe anyway. But I guess digital medium platform demands this. Keep do it like this. I don't really like it. I don't really like it, but I guess it's a necessity also for lots of people. अब अगर डीजे नारायण मेरे शो पे आए हैं और उनसे मैं गाना ना सुनूं तो ये तो भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एंड ऐसी मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती प्लीज डीजे आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि जो लोग आपको देख रहे हैं आप उन सब के लिए और हमारे लिए एक प्यारा सा कोई अपना फेवरेट गाना सुना दीजिए So, okay, in case you're saying so, I'll try. This is for your generation or the generation that heard Aryans. Ever since you've gone away, baby, I'm just missing you. Guess कौन सा गाना है? Ever since you've gone away, baby, I'm just missing you. You're in my heart, you're in my soul. Baby, I'm just missing you. Here am I all alone. Here am I all alone. तेरे बिन बनती ना कोई बातें, तेरे बिन सुनी सुनी रातें. एक बार कह दे दिल में आके, क्या दीवाना मेरा दीवाना. हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना. आंखों में धड़कन में करती है दीवाना. So this is the latest song, फुर्सत के दिन. मोहल्ले की सड़कें वो जौनी की भजिया, गुलाबी पतंगे वो गुड़िया की गुड़िया. बहुत खूबसूरत और बेधड़क दिन थे अपने, छोटी सी दुनिया में सभी तो थे अपने. फुर्सत के बाद वो मीठी मीठी यादें, जाड़े के दिन कोजी कोजी रातें, छज्जे की वो लंबी लंबी बातें, बारिश के दिन वो भीगी भीगी रातें. फुर्सत के बाद वो मीठी मीठी यादें, भोले से मन सपने वो वादे, उसको पता ना था जिसको थे चाहते, सपनों की डोरी से पतंग थे उड़ाते. जहाँ डली कोई शाम याद आए तेरा नाम, 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 मेरे दिल की दुआ में तेरा नाम. Oh my God, I cannot believe I really spoke to you. You know, it's been so super long. And seriously, DJ, I am really missing your content. I'm missing the music क्योंकि अब ना content market बहुत deplete होती जा रही है. And we all need good content. People like you should never stop.
प्लीज आप कुछ अच्छा अच्छा सा लेकर आइए ताकि हम लोग वापस रिवाइव कर पाए अपनी लाइफ को, हम अपनी मेमोरीज में हम अपने डेज को वापस जी पाए। एंड थैंक यू सो मच डीजे फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस एंड कमिंग ऑन दिस स्क्रीन। ये भी सोशल मीडिया का ही एक कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे जाएगा, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस व्हाट ट्रेंड इज ऑल अबाउट एंड वी हैव टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म नाउ एनी विच वेज. So thank you so much, DJ. It was so super pleasure talking to you after so long, really. Thank you. Hey guys, thank you so much for watching and supporting Chit Chat with Swati Bhatia. And I'm sure मैं आगे बहुत सारे कंटेंट लेकर आऊंगी, बट अगर आपके पास कोई आइडिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप किस टाइप का शो देखना चाहते हैं, किस टाइप के लोगों से और मिलना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। चिट चैट विद स्वाति भाटिया के साथ आप जुड़े रहिए, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सा आइडिया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। Till then, with new content, I'll be coming very soon. Take care, bye.